Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. It's the most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with the news topic list. Today is 29th of August. The first news that is revisiting S. Subramaniam Balaji versus Tamil Nadu judgment. This is from the text and context page of the Hindu. Second news that is Prime Minister urged people to join fight against the malnourishment. We'll see the detail about this. Third, that is Center releases third Indianization list to boost the self-reliance or Make in India initiative. Fourth is Johnson & Johnson's to discontinue the sale of talc-based baby powder. So some issues are related to this. This can be relevant for your prelims as well as for the mains examination. And at the end, there's a editorial that is curtain for Pegasus. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based questions, and these questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before I start, those of you who are new to the channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination, do not forget to press a like button. So starting the session with the first news, that is revisiting S. Subramaniam Balaji versus Tamil Nadu judgment. This particular news is important under the topic General Studies Paper 2. The topic is Structure, Organization and Functioning of Executive and Judiciary. This is very important for prelims and mains examination. ये दोनों जगह पे काफ़ी ज़्यादा relevant है. So make sure you understand this topic well. Mains में thoroughly आप इसको analyze भी कर सकते हैं. So recently the Supreme Court has referred the issues of freebies for which several petition was filed in the Supreme Court. तो जो CGI है उन्होंने 3 judge bench के पास ये मैटर को रेफर किया है and the issues was regarding the directions to the political parties who make wild promises for the largest shows that all reveal that their poll manifestos where they will get the monies to paid out of them. बेसिकली अगर बात करें फ्रीबीज को लेकर के फ्रीबीज की इश्यूज काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अभी कंट्री में. इवन CGI हैज़ रेज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर हैज़ रेज कंसर्न. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर पिक्चर रखने के लिए जो पुराने जजमेंट्स हैं बेसिकली तमिलनाडु से रिलेटेड वहाँ से, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए डायरेक्शंस की बात की है उस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए 3 जज बेंच के पास रेफर किया. Now this reference is a shift from country's own stand in the S. Subramaniam Balaji versus Tamil Nadu judgment जो कि 2013 में दी गई थी और यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली लेजिटिमेट बताया था या होल्ड किया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके जो स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं मैनिफेस्टोज को लेकर. नाउ व्हाट इज दिस ऑल जजमेंट ऑल अबाउट. अगर बालाजी केस जजमेंट की अगर बात करें, so in the Balaji case judgment, a division bench of the Supreme Court has held that the promises in the election manifesto do not amount to the corrupt practices. So this is a point that you can take a note of. Supreme Court की जो divisional bench है, division bench है, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि ये कोई corrupt practices नहीं है under the section 123 of the Representation of the People Act, right? However, the Supreme Court is now worried that the freebies promises which is made by the political parties, वो जो पब्लिक एक्सचेकर है खास करके जो स्टेट की एक्सचेकर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रही है और पब्लिक एक्सचेकर पूरी तरह से ट्राई अप हो रही है. Now this is something the Supreme Court has to examine, that what they have stated earlier that this is not a corruption has already been misused by many political parties. But again यहाँ पे larger debate ये है कि क्या वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर ये फ्रीबीज वाकई में कुछ ऐसे सेग्रीगेटेड चीज़ पे होनी चाहिए जो वेलफेयर को प्रॉपरली डिफाइन करती है. ऑल्दो अगर इंडिया में बात करें फ्रीबीज, सो डेफिनेशन हैज़ नॉट डिफाइंड येट and the Supreme Court is of the opinion that first the political party should define what is freebies. Either it should be coming from election commission directly या फिर Supreme Court इस concern में कुछ guideline है, right? Now the court said that the parties from whom the government is riding the wave to create a pre-poll promises, जिसको free gifts के तौर पे भी देखा गया, is bleeding the state finances but actually fulfilling their outstanding promises
to use the public money. तो कोई भी ऐसी fake promises, it's not fake promises actually, it's a promises that is being political parties used to make it through मैनिफेस्टोस, बट क्या वो जेन्युइन है उस तरह के प्रोमिसेस? अगर किसी ने किसी को टेलीविजन, गोल्ड प्लेट्स या इस तरह की और बातें देने की बात की, तो क्या वो वेलफेयर स्टेट्स के अंदर आएंगे उस कॉन्सेप्ट को, या फिर वेलफेयर स्टेट जो स्टेट्स की जो कॉन्सेप्ट है उसमें एजुकेशन फ्री करना, हेल्थ केयर फ्री करना, दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन प्रायोरिटाइज. सो अदर एरियाज और क्योंकि से ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में फ्रीबीज के अंदर आती हैं, तो उसे हमें प्रॉपरली डिफाइन करना हो, डिमार्केट करना हो. The Supreme Court has therefore decided to revisit the Balaji verdict which was there. और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये करप्शन प्रैक्टिसेस नहीं होती है अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. नाउ व्हाट हैज ट्रिगर्ड द बालाजी केस? सो a course of event which started in 2006 during the run-up trial of the Tamil Nadu government election. ये आपको ये मैं background बता रहा हूँ. This is basically a background, right, to help you understand that what has actually happened. So to understand the background, आपको ये समझना होगा जो DMK पार्टी है तमिलनाडु में, they have released the election manifesto and where they have promises कि एक कलर टेलीविजन की जो सेट है वो हर एक हाउस होल्ड को दी जाएंगे. एंड जस्ट टू टेल यू दीज व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले रेलेवेंट ना हो, बट आपके समझने के लिए चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, राइट? सो दैट इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस एग्जाम्पल, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ दिस एक्चुअली हैज इट्स ओरिजिन और बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में. तो डीएमके जो पार्टीज थी उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कलर टेलीविजन देंगे लोगों को इफ़ दे विन, और बाद में प्रोमिस भी की गई दैट जो ये टेलीविजन्स होंगी ये हर एक वुमेन या फिर हाउस होल्ड को नॉलेज प्रोवाइड कर लेंगे, पर्टिकुलरली फॉर दोज इन द रूरल एरियाज. तो इसको नॉलेज के या फिर जो डेफिशिएंसी है उससे रिलेट करके देखा गया. और दिस पॉलिटिकल प्रोमिसेस वाज मेड आफ्टर दिस पार्टी कम इनटू पावर, राइट? सो दिस पार्टी स्विफ्ट टू पावर पोस्ट एंड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज स्पेंट 750 crore rupees. You can see the huge amount was invested. And the government has finally disputed 30,000 TV sets in the states, right? So ये तो DMK पार्टी. उसके अलावा एक और पार्टी के 2006 में इलेक्शन हुई. So जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुई थी उसमें नेक्स्ट इलेक्शन फिर 2011 में ड्यू थी. आफ्टर एवरी 5 year वी हैव अ इलेक्शन इन इंडिया. सो उसके अलावा जो AIDMK उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो भी फ्री गिफ्ट्स देंगे विच विल बी लाइक प्रोवाइडिंग देम ग्राइंडर, मिक्सर, इलेक्ट्रिक फैंस, लैपटॉप्स एंड अदर गोल्ड थालीज विच वुड बी अमाउंटिंग टू 4 grams, और 50,000 rupees वुमेन्स को दिए जाएंगे फॉर देयर मैरिजेस, राइट? ग्रीन हाउसेज होंगे. तो ये सारे प्रोमिसेस किए गए. एंड इवन फ्री शिप एंड कैटल वाज प्रॉमिस्ड बाय द अदर पार्टी इन द 2011 इलेक्शन. व्हाई the people, the parties were motivated because 2006 में जो प्रॉमिस की गई थी उसके थ्रू डीएमके ने वहाँ पे अपनी पावर को बेसिकली बनाया था, सरकार बनाने में वो सफल रहे थे. So that is the reason it motivated them, and this party in 2011 they have also come up with the promises. Now इसको देखते हुए Mr. Balaji, whom which the judgment is actually there, he is a resident of Tamil Nadu. He has challenged that the scheme introduced was actually not beneficiaries and it is something which is drying up the state exchequer. So he said that the expenditure that has to be incurred by the state from the exchequer was unauthorized, impermissible and ultra virus of the constitutional mandate. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पिटिशन फाइल की थी तमिलनाडु, राइट, मद्रास हाई कोर्ट. The High Court has dismissed this case, following which he has moved to the Supreme Court finally, जहाँ पे डिविजन बेंच है उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोमिसेस जो करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएंगी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, किस तरह से डीएमके और AIDMK ने इस तरह की इंटेंशंस के साथ स्टार्ट किया, जहाँ पे एक फ्री बीज या फिर इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो वहाँ पे स्टार्ट हुए. नाउ हाउ डज दिस केस पार्टी प्ले आउट? So the Balaji, represented by the senior advocate and the state, said that the state cannot have a furtherance of attractive principle of the social philanthropy, right? तो state किसी भी तरह की ऐसी policies नहीं ला सकती है जो कि corrupt practices को भी promote करे. He argued that the promises of the free distribution of the non-essential commodity, just mark this word, non-essential commodities की अगर promises की जाती है तो वो सही बात नहीं. But this in the election manifesto to the electoral bribe, and it amounts to the electoral bribe under the section
123 of the Representation of the People Act. So इस प्ली में एक्चुअली कैटेगोरिकली ये बताया गया कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो इलेक्ट्रेबल ब्राइब के अंदर कैटेगराइज की जा सकती है. नाउ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के मुताबिक, इफ यू टॉक अबाउट द कैग, they said that it is to examine the expenditure before they are deployed, and moreover money taken out of the consolidated fund of India, अगर या फिर CFS की बात करें, consolidated fund of state is only for the public purposes. अगर कोई भी पैसे CFS consolidated fund of India या CFI पे चार्ज होते हैं तो उसका मेन पर्पस बेसिकली पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक के लिए ही होना चाहिए. The distribution of goods to the certain section of the people violated Article 14 also, जो कि कहता है equality before the law was violated by the promises that was actually made by the political parties. This continued from 2006 to 2011, right? दोनों बार ये continued. Now, Tamil Nadu government की क्या stand थी? Although the Balaji has reached to the Supreme Court, तो Tamil Nadu government ने भी defense किया. In response to that, the state government has countered that the promises made by the political parties does not constitute the corrupt practice. Definitely, state government अपने आप को defend करेगी. And the political parties are not of the state, that the freebies is a nebulous term and no legal status. The promise implemented by the parties are obligations under the DPSP, right? तो उन्होंने कहा कि ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर है. एंड आई हैव रिपीटेडली टेल यू दैट ये एक ऐसी सवाल है जो कि डीपीएसपी से रिलेट होकर के आपसे मेंस में ज़रूर पूछी जाएगी. सो मेक श्योर आप इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रखें. वेलफेयर स्टेट्स की क्या डेफिनेशंस बताई गई है डीपीएसपी में वो आपको थोड़ा होना चाहिए ताकि यू कैन राइट दिस इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट. द स्टेट इज only doing its duty to promise the welfare for its people. This is what the Tamil Nadu government has said in the Supreme Court. The promises are implemented by fair schemes, eligibility criteria as well as within the approval of the legislature. तो बेसिकली कोई भी बिल जो पास होती है उसमें बिल को पास करने के लिए अपोजिशंस के भी वोटिंग्स, सारे लोगों की वोटिंग ज़रूर होती है. सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि ये स्टेट्स में जिस तरह से पॉलिसीज पास हो रही है वहाँ पे कंसेंट अपोजिशंस की भी. Now, thus, it cannot be constructed of the waste of the public money and prohibition for any kind of status or the schemes. Now, the court or the court judgment has held that the promises made by the political parties does not constitute a corrupt practices, right? And it would be misleading to construe that all promises made in the election manifesto would mount to a corrupt practice. So, ये स्टेट गवर्नमेंट ने डिफेंड करते हुए कहा, द मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज अ स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी. दिस इज व्हाट दे हैव डिफेंडेड विद, एंड द क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनिफेस्टो अराइजेज ओनली व्हेन पार्टी विंस. ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, इंडिविजुअल के कंसर्न पे नहीं की जाती है. एक पूरी पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिसी, जो उस पार्टी की जो पॉलिसीज है उसको रिप्रेजेंट करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल के विल को, राइट. It asked the election commissions to consult the political parties and issues guidelines with regards to the election manifesto and as a part of the model code of conduct. तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि क्या इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कह सकते हैं. So this is what the Supreme Court has directed the election commission to look into the matter, right? Now, why the review of Balaji judgment is significant? See, I have broadly covered this topic to make you understand what is the background and how the implication can be. तो अब समझते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिव्यू करने की बात की है. In order, the Supreme Court foreseen that the freebies may create the situation where the state cannot provide the amenities due to the lack of the fund, and even the state is pushed towards the imminent bankruptcy. क्योंकि कई ऐसे states हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं बैंक से ताकि वो अपने promises को meet कर पाए, right? And the court said that it wants a transparent debate before the three-judge bench, which will see that whether it is enforceable in the judicial order or to stop the political parties from the irrational freebies distribution. And this is the reason for the time being, this is the need of the hour to understand the rationality of the freebies. Now, the case is unique for the Supreme Court to explore whether the judicial parameters should have a priority on the political action and the promises of the freebies. तो freebies के definitions को देखना होगा. freebies के साथ ये भी ज़रूरी है कि जो DPSP के concepts हैं
उस पर गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी स्टेक्स है, कितने पावर्स हैं कि वो डीपीएसपी से रिलेट करके फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट्स को क्या एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाएंगी. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैज टू बी लुक अपॉन बाय द 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट में अभी बेसिकली बनाई गई है. और ये 3 जज बेंच अपनी रूलिंग्स देंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे, देन ओनली the election commission can further guide the political parties how this can be moved ahead. Now, the Prime Minister urged the political parties to join fight against the malnourishment. This topic is important for General Studies Paper 2. That is under the welfare schemes for the vulnerable section of the population by the centre and the state government. So, the Prime Minister, while addressing the Man Ki Baat radio broadcast recently, has urged the people to remove the malnutrition while stressing that social awareness is very crucial against the fight of the malnourishment. Right? The Prime Minister has categorically said this is a time that we need to overcome with this problem. And he said that the Amrit Dhara of Amrit Mahotsav marks 75 year of India's independence, and all concern is that from this month onwards we should take a pledge that we will be removing the malnutrition from entirely. नाउ गवर्नमेंट ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें ज़रूरत है कि एक फाइट ऑफ मैलन्यूट्रिशन के खिलाफ करने की ज़रूरत है. द प्राइम मिनिस्टर अर्ज द पीपल टू कैंपेन टू फाइट द malnutrition from the coming month, and the Prime Minister noted that beside festival September he has dedicated the big campaign to run nutrition, and we celebrate Poshan Ma from the month of September. Right, 1st to 30th September will be treated as the Poshan Ma. Many creative and diverse efforts are being made against the malnutrition by the government. बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने malnutrition को कर्ब करने के लिए बनाई हुई. Now even the Prime Minister said that the better use of technology and public participation can be very important to ensure that the Poshan Abhiyan is successful. Jal Jeevan missions की अगर बात करें, this is going to have a bigger impact in making India malnutrition free. Now, awareness campaign, that is very important because people are actually not aware that how things can improve, what is malnourishment, how we can overcome it, how the nutritional deficiency can be overcome. तो उसके लिए awareness campaign एक बहुत ही important चीज है. The Prime Minister said that the efforts associated with the awareness can play a very important role in dealing with the challenges of the malnutrition. And he urged the people to watch the Swaraj serial, which was highlighted to be there for the freedom fighters on दूरदर्शन. राइट, इंडिया में अगर बात करें malnutrition की, you can see the comparison is there for 2005 to 2015-16. So earlier these are some of the data, although this is old data, but even you can take the reference to understand how things has increased or decreased. Right, these are the color coded, you can check the details over this for the stunt, underweight and wasted. Now, examples of good practices की अगर बात करें, the Prime Minister has categorically said that Project संपूर्ण program of Assam, कुछ examples लिए गए state governments के जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए malnutrition को ख़त्म करने के लिए. तो आसाम में Project संपूर्ण है, which is under the in which the mother of a healthy child meets the mother of the malnutrition child every week of the Anganwadis and discuss the information related to the nutrition. And even मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश और झारखंड में they were songs that games that key tools for ending the malnutrition. So awareness through all these efforts can also be done. Now the UN is expecting the proposals to observe 2023 as the International Year of Millets. And Prime Minister has said that it has been his endeavor to serve the dishes made from Indian millets to the foreign guest whomsoever is visiting India. तो ये आपके लिए ज़रूरी है, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट. दिस इज कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. Now moving to the other news, that is Center releases third Indianization list to boost the self-reliance. Something relevant for General Studies Paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from a design and implementations. So recently, the Defense Minister of India, Mr. Rajnath Singh, has approved the fresh list of 780 components and subsystem which will only be procured for the domestic industries. जो domestic industries है सिर्फ वहीं से procurement की जाएगी और इंडिया किसी भी तरह से उनको import नहीं करेगी. Right? So a ban on the import will be there and it will kick start under the stated line around 6 year. तो ये 6 line की down the line की plan बनाई गई है, roadmap बनाई गई है.
that how government will be coming up with the entire procurement process for the defense equipments. Now, the defense ministry has set a specific timeline for import ban, जहाँ पे ये period जो span की गई I've told you for 6 है, this is for 2023 till 2028. Now, India is facing a tough challenge from the neighboring countries, especially in the northern and western frontiers. And India is one of the largest importer of the arm globally, जो कि हमारे जो reserve है, foreign reserve है, उसमें भी काफी ज़्यादा impact करती है forex reserve को. Now, this is the third Indianization list. से पहले और भी list आई है. Just to give you details, this is the third Indianization list जो कि positive Indianization की तरफ कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, जहाँ पे जो line replacement unit है, which is also known as LRU units, subunits, subsystem components will be used for the various military platform, equipment and weapon. This aims to minimize the imports of the defense public sector undertaking. जो DPSUs हैं, उनमें imports को कम करने की बातें कही गई. And the list is the continuation for the two similar positive lists that was brought first in December 2021 and in March 2022. Now, Indianization will be done under the make category. So, what is this make category? Let's see. According to the Ministry of Defense, the Indianization of various military platforms, that is the equipment, weapons, will be taken through the different route under the make category. और make category का मतलब है aims to achieve self-reliance by involving the greater participation of Indian industry in the defense manufacturing. So things that is manufactured in India, we are looking forward for Atmanirbhar Bharat, we're looking forward for Make in India initiative, right? चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो या फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की बात हो, गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रोएक्टिव इन दैट पार्ट. नाउ projects involve design, development, equipment, system, major platform upgrade. Therefore, the industries can take up with this category and can move ahead with make categories. Benefits क्या है Indianizations के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है? Definitely, it has a huge benefit. So it is said that the indigenous development of this item will bolster the economy and reduce the import dependence on the DPSUs. जो भी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें जो उनके लिए जो बर्डन है, इवन जो इंपोर्ट को लेकर के खास करके फाइनेंशियल क्रंच होते हैं, वो उसमें भी राहत मिलेगी. इन एडिशन इट विल हेल्प टू हार्नेस द डेजिग्नेट कैपेबिलिटीज ऑफ द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज and positive India as a designated leader in the design technology. Even we are upgrading on the technological part also. In the last few weeks, the government has also taken series of measures to promote domestic and defense productions. तो कई ऐसे initiatives लिए गए हैं. Even if you talk about AK-47 और AK-203 that is being manufactured in Amethi, जहाँ पे रशिया के साथ collaborate किया गया, तो ऐसे कई सारे initiatives हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हुए for the indigenous development of the defense item or the defense basically essential item that is required. Financial burden and planning की अगर बात करें, it is estimated that the arms force are projected to spend around $130 billion, which is close to 100 crores in the capital procurement for the next 5 years, right? And government now want to reduce the dependence. And अगर बात करें इस तरह से जिस तरह से goal हमारी अचीव होती है, so India would be achieving somewhere close to turnover of 25 billion, that is 1.7 lakh crore rupees, that defense manufacturing for the next 5 years, which will also include the target of US 5 billion worth for the military hardware. So if Indianization process is successful in India with a huge roadmap that is being built by the government, India would definitely achieve this success, right? Now moving to the other news, Johnson & Johnson to discontinue the sale of toll-based baby powder. Something relevant for general studies paper 2, that is the issues related to development management of health. तो कुछ issues हैं जो आपको समझने की जरूरत है. So US Pharma, that is Johnson & Johnson, एक बहुत बड़ी कंपनी है, that has been, they have said that they will discontinue the talc powder for the baby which was used for all over the world. और उन्होंने कहा है कि वो next 2023 से सारे versions जो हैं उनके talc के उनको बंद करेंगे और corn starch based वो प्रोडक्ट को लेकर के आएंगे. तो कॉर्न स्टार्च बेस्ड इज अगेन समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. आपको ये पूछा जा सकता है किस तरह की टेक्नोलॉजी या किस तरह के इंग्रेडिएंट वो यूज करने वाली. द मूव इज समथिंग more than 2 years after the drug maker ended the sale of the baby powder in the US and Canada, amounting to the lawsuit
और ये बताया गया है, ये कंसर्न रेज की गई है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो बेबी टैल्क पाउडर है दैट कैन कॉज द पोटेंशियल, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ कार्सिनोजेनिक आइटम। द यूएस बेस्ड कंपनी हैज रीइटरेटेड, उन्होंने अपने बातों में अपनी क्लैरिफिकेशन में दोहराया है कि किसी भी तरह से ये कैंसर कॉज नहीं करती। डेफिनेटली कंपनी विल बी डिफेंडिंग इट्स पार्ट, बट द एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज अ कार्सिनोजन। The child group parents and the doctor have been questioning the availabilities of the product in India. India में अभी भी ये available है, and the drug regulator in India is silent on this part, allowing a wide availability of the sale of the product in the country. So if you know someone, basically, although the company has categorically said that it is safe, but we as an enlightened citizen, we as a knowledgeable people, do you need to tell the people whomsoever is using, आप उनको बता सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट को वो डिसकंटिन्यू करें फॉर टाइम भी। Now concerns over asbestos, अगर बात करें ये एक ऐसी केमिकल है, asbestos is something which is a carcinogen in nature. So the American society generally accepted the tag which contain asbestos which can cause a cancer, and it is a carcinogen than the crystal, even for it is far harmful than that, and prolonged breathing of the asbestos can increase the multiple cancer and lead to the lungs and colon cancers. तो एस्बेस्टॉस की अगर कंटिन्यूशन यूज होती है तो लंग्स कैंसर में को भी प्रमोट कर सकती है। एंड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो द 5 year of age कैन इवन बी इन्फेक्टेड, एंड दिस इज बिकॉज द ऑर्गन फॉर द मदर एंड अडल्ट, अगर अडल्ट के मुकाबले जो ये बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, एंड इवन इट कैन इम्पैक्ट द अडल्ट ऑल्सो। सो एस्बेस्टॉस कॉज mesothelioma, lungs cancer and other cancer. So this is carcinogen in nature. So its use should be immediately discontinued. The government of India also need to take proactive measures to ensure that the product that is being sold in India should be completely prohibited. Now moving to the editorial of the day, that is the curtains for the Pegasus, something relevant for General Studies paper 2 under the topic important aspects of governance, transparency, accountability and e-governance. So what is the theme of this editorial? This editorial talks about the Pegasus issue, where the Supreme Court has struck down the opposition basically claims, where it said that the Pegasus was used for the opposition parties. So we'll try to understand with this article theme the 4 important subhead, that is the background, expert committee की क्या report है, consumer right किस तरह से digital age में पढ़ने की जरूरत है, and the conclusion part. So with the Supreme Court appointed committee rubbishing that the opposition charge of the government spying individual using the Pegasus as spyware which is being built by the NSO Israel की ग्रुप है, उसने इसको डेवलप किया था, और NSO सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट को सेल करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सेल करती है ताकि वो टेररिज्म या किसी तरह के एक्टिविटीज को रोकथाम कर सके। Now the committee supervised that by the retired Supreme Court judges R.B. Ravindran said that the definite proof for the use of Pegasus and improvement for the charges spying made by the consortium comprises of the opposition's global Indian NSO based and even जो NGO है सिविल राइट्स एक्टिविटीज हैं, उन्होंने भी कहा था इस तरह के स्पाइंग को रिपोर्ट किया गया है बहुत सारे इंडिविजुअल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड टू लार्जर एक्सटेंट दिस इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी. This is what the group has categorically reiterated in its PIA. So looking into the entire allegation that was made by the opposition, the expert committee was formulated. The expert committee was constituted to investigate the allegation for the misuse of the Pegasus software. And it was alleged that the spyware was used to target nearly 300 Indians, including the politicians, government servants, journalists, and other people. And the panel was headed by the former Supreme Court Justice, that is R.B. Ravindran. The panel submitted its report to the Supreme Court in July itself. Now, consumer right की बात की है government ने. The efforts of the central government is to protect the right of the Indian consumer in the digital age. और जो present government है that has strengthened the consumer right in many areas. With the Supreme Court ruling of the right to privacy, जब fundamental right को लेकर के बातें कही गई है, the government is formulating a comprehensive framework to ensure that data protection and privacy to protect the citizen is current with the digital age. खास करके के एस पुट्टास्वामी की जो जजमेंट है उन्होंने राइट टू प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया. नाउ कंक्लूजन की अगर बात करें, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट बेंच और जो कमेटी बनाई गई उन्होंने क्लीन चिट दी, किस तरह की कोई इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट की गई है. तो कंक्लूजन ये दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बॉट द कर्टेन्स डाउन
On the manufactured Pegasus controversy, it says that this is something that was fabricated, manufactured by the opposition, and now that the opposition stand exposed, their strategy for missliding is going further and it erodes the credibility of the opposition, right? So until unless something with a very strong evidence is brought by the opposition, it cannot be an established fact, and the Supreme Court has categorically said that this was done with a malafide intention, right? So this is how you can conclude your answers. Now, moving ahead with the MCQ questions of the day, before I proceed, just to tell you the answers of Saturday questions. For first question, the correct option is B. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice, आपको बताना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में. The Bureau of Pharmacy of India is implementing agency for this, and the schemes aims down to bring down healthcare budget for citizens of India by providing the quality generic medicine at affordable prices. Second question of the day, that is Global Bio India 2021. Although this is news from 2021, but this is still relevant, right? The initiative was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The theme for this year was transforming lives with the tagline biosciences to the bioeconomy. So do check it out for the correct options. This type of question will be relevant for your upcoming prelims examination. This was all about for the daily news and editorial analysis, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.